cannot find the right answer because I don't. Okay, we are recording this session. I, You cannot find the right okay. answer. There are many reasons why you're not able to find the right answer. Number one is that are you following a grammatical rule? No. Secondly, I that I yes uh yes yes secondly, I cannot find it. how good is your vocabulary? Do you know the meanings of the word? Yes, I can translate all the paragraph, but I cannot find that what is the right answer. I even know that what is the translation of the paragraph. I always know that what is the meaning of this word, but I cannot find the right answer because my grammar is not good. I think so. The grammar do play a part, but basically knowing the definition, the meaning of the word is actually required. So if you say you know the translation, the meaning of the word, then it should not be an issue for you. Have you booked your exam? When is it? No, I haven't booked yet. That's a good thing you didn't, because until and unless you are ready, don't do it because it's waste of money. Yes, Okay. yes, So that's a good thing. So now, because you are having problem in the fill in the blanks, first you should concentrate. You know that you have to solve the blank like within 2 minutes. But first, your yes, strategy should be to, while you are practicing, you should not care how long it's taking you for practice. With the passage of time, you okay, can improve the timer. But for okay, now, you should know that are able to solve the answer correctly, the paragraph correctly. So let me share the screen with you. Okay, you are having issue with fill in the blanks reading, writing, or uh, just only reading, writing. okay, reading, writing. Yes, only reading, writing. So just give me a minute. I open one of the fill in the blanks reading, writing question, and let's see how you do it. Okay. Yeah, this. So, do you think you are able to complete? No, you're not able to. Do you think even the timing is an issue for you? No, I don't focus on timing. Okay. I just practice and But I in the just exam, want. you have to focus on the timing. So, this is the paragraph, and it's about willful blindness. Okay. So, the strategy should be you should read the first line, which is willful blindness has started life as a legal concept in the 19th century. Whenever you're doing a fill in the blank, make sure that you just read the line which has the blank. Don't read the other part. I know this might not sound good, but you will get confused if you start reading the whole paragraph. So it's like Yes, advisable that you should just read the line. Like for example, the line starts from here, a judge, from a judge till here, the fact. You just read the line first from full stop to full stop. A judge in Regina was versus Sleep ruled that an accused could not be convicted for possession of a government property dash. The jury found that he either knew the goods came from government stores or had willfully shut his eyes to the fact. So they are saying that there is a person who knows that the robbery has happened, but he's being ignorant about it. So this is what the paragraph is saying. Now you open the drop down menu and you look at the words since, unless, although, thereby. So I think they are more form of a propositions over here, like connecting words. So let's go through it. That an accused. So do you know the meaning of since? yes. Since What? Huh? Since is? since means after or before side before Before the starting, like since October yes 31st. before the starting. Since occurs when you know the starting point, but you don't know the ending point. For is for like if you know the whole duration, like for 2 years. So you know that it Yes, lasts for two like years. it's 19th century. Uh-huh. Since 19th century, that means you know the starting point, but you don't know the ending point. Yes, Okay, don't unless. know the ending point. So what is unless? Unless means without anything means Okay, although, I can find the right answer. Unless although.
I am so confused. Although or thereby. Okay, so let's look at the rule that an accused could not be convicted for possession of government property dash the jury found that he either. So what do you think would be the answer? Could it be the since property since the jury found out that he either knew the goods came from government stores or had willfully shut his eyes? A judge in Regina Sleep ruled that an accused could not be convicted for possession of a government property dash the jury found. Since the jury found? I think since is the right answer. Do you think since is the right answer? Yes. I think. Okay. Okay, we will go through it why you used since later on after checking the answers. Now let's come to the other blank which starts from over time, lots of other phrases came into play deliberate or willful ignorance, conscious avoidance, and deliberate indifference. What they all have in dash is the idea that there is an opportunity for knowledge and a responsibility to inform us, but it's shielded. What they all have in, मुझे तो लग रहा है the word will be common, anyways. So what they all have in contrast means what? The word contrast means The word contrast mean two different things. two difference. Okay. Total means Total means sum of anything. okay. And relation. Relation is relation between Oh, two things. between two. I Okay. guess. And common. Common is आम मतलब एक common thing, any common thing. Okay. So what should be the word? What they have all is Because the sentence is what they all have in. all All. have it. Huh. So it All. will be common, It will but be all com have common thing. common, yes. Because if you see, na, they are saying that deliberate and willful ignorance, जानबूझ के, conscious avoidance, उसको पता है कि वो avoid कर रहा है, deliberate indifference, वो deliberately avoid कर रहा है, तो ये सारी चीजें common ही है. Okay, let's come to the next plank. Nowadays, the law is dash often applied in cases of money laundering and drug trafficking. If you've been paid a large amount of money to carry a suitcase, then you are being willfully blind if you don't check what is inside. कि अगर आपको एक बैग दिया जा रहा है और आप जानबूझ के नहीं चेक करते कि इसके अंदर क्या है, तो आप जानबूझ के कर रहे हो. So nowadays the law is Willfully blind. dash. Nowadays the law is dash often applied. The law is dash often. So what will be the little often, few often, most often, less often? I think we often applied. No, most often. Most often, exactly. Because sometimes, Most often, yes. yeah, but sometimes exactly. Sometimes you have to choose the word which sound good to the ear. जो कानों को सुनने में ग्रामेटिक सुनने में Yes. अच्छा लग रहा हो, सेंस कर रहा हो, खूबसूरत लग रहा हो. मतलब जैसे आपको ना ग्रामर पुलिस बनना नहीं पड़ रहा because it's so obvious. So I think one of it is wrong. Let's see. I hope it's not. I think since is Is wrong. wrong, I think. Since. I think since is wrong. Okay, so we were right. Since yes. प्रॉपर्टी अनलेस द ज्यूरी फाइंड आउट कि आप उसको तब तक इल्जाम नहीं लगा सकते दैट स्लीप जब रूल दैट तक एन आपने देखा अक्यूज्ड ना. कुड नॉट बी कन्विक्टेड यानी कि जिस पे इल्जाम लगाया है उस पे आप उसको जुर्म साबित नहीं कर सकते जब तक Unless, जूरी नहीं फैसला कर लेती अंटिल द जूरी फाउंड आउट जूरी काइंड होते वो कोर्ट में लोग बैठे हुए होते हैं आपस में डिसाइड करते हैं कि जी yes, ये जुर्म हुआ था कि नहीं हुआ था ठीक है bench of judges मेरा ख्याल इसको बोलते हैं. एग्जैक्टली सो यू नो एवरीथिंग द ओनली थिंग वाज आप जो वर्ड्स हैं उनको फिर थोड़ा सा ना नाप तोल के करें और फिर उसमें फिल्टर आउट करें कि कौन सा वाला मेरा मुनासिब ख्याल है मेरा ख्याल है मैं ना ज्यादा तेजी कर देता हूँ सिलेक्शन में. हाँ आपको सारे लफ्ज को एक एक को बिठाना पड़ेगा जुमले में ठीक है फिल्टर आउट करना पड़ेगा ये चेक करना पड़ेगा ग्रामेटिकली ठीक है कि नहीं सुनने में कानों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा क्योंकि देखें आपका दिल कर आपने कहा ना मैं जल्दी करता हूँ दैट मीन्स आपका दिल करता है आपका दिल कहता है कि ये होगा आपका दिल की नहीं चलेगी ठीक है यहाँ पे आपकी दिल की नहीं चलेगी दिमाग की चलेगी तो यू एक्सेप्टेड योर सेल्फ दैट
Yes, you are quite in a hurry to when you are going for an answer. No, you have to judge and weigh. हर वजन करके देखें, नाप तोल के देखें कि कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। यहाँ पे दूसरे दो आपने खुद किए हैं, ठीक है, और वो आपके ठीक हुए हैं। ओके, लेट्स डू अनदर वन। Okay, let's look at this public archaeology. So let's come to the first. Now you start the reading the blank. Can you see the screen? yes. The aim Okay. of the book is to give the reader an overview of study and practice in the field of public archaeology. So it offers a series of snapshots of important ideas and areas of work brought together in an introduction. Introduction Dash and inevitably brief. brief and incomplete one. ठीक है, एज एन इंट्रोडक्शन डैश एंड इनविटेबली ब्रीफ एंड इनकम्प्लीट वन। वो कह रहे हैं कि जी एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है जो थोड़ा सा है और इनकम्प्लीट है। अब देखते हैं, यही ऐसा ही हो रहा है ना, वो एक इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं कि किसी चीज का Yes, इंट्रोडक्शन है, एक आइडिया है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है जो थोड़ा सा है और इनकम्प्लीट है। इंट्रोडक्शन डैश एंड इनविटेबली, ठीक है, बिकॉज एन इनविटेबली ब्रीफ, albeit and inevitably brief, unless and inevitably brief, despite and inevitably brief, and incomplete, one to one of the most challenging. Again, right. let's read the line again. It offers a series of snapshots of important ideas and areas of work brought together as an introduction, dash and inevitably brief and incomplete, one to one of the most challenging and regarding parts of the wider archaeology. क्या हो सकता है? I think Again, the aim of this book, because the aim of this book is to give the reader an overview of study and practice in the field of public archaeology। की किताब के बारे में बात हो रही है। It offers a series of snapshots of important ideas, तस्वीरें हैं इसके अंदर, and areas of work brought together as an introduction, dash and inevitably brief and incomplete, one to one of the most challenging and rewarding parts of the wide archaeology. about an About and immensely brief and incomplete one। नहीं, मुझे नहीं लगता albeit होगा। एक मिनट, despite लग रहा है। albeit and inevitably brief and incomplete one to one of the most मुझे challenging। अल्बाइट का मीनिंग नहीं पता है। albeit means अलबत्ता। अल्बाइट का मतलब क्या अलबत्ता जिसे हम कहते हैं ना, आप है? कराची जा सकते हो, अलबत्ता। अलबत्ता आजकल ईद के दिनों में टिकट नहीं मिलेगी, अलबत्ता, ठीक है, ये हो सकता है, मगर मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड है, अलबत्ता की तरह ही है albeit। ओके। क्या हो सकता है? मे बी यू आर राइट, मे बी अल्बाइट मे बी द राइट वर्ड। फिट करके देखें। जी अल्बाइट अल्बाइट का। इनविटेबली ब्रीफ एंड इनकम्प्लीट वन टू वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ द वाइडर आर्कियोलॉजी डिसिप्लिन। थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे बिकॉज लग रहा है या अल्बाइट लग रहा है। अल्बाइट कर दें। अल्बाइट कर देते हैं, चले, लेट्स सी नेक्स्ट। कहाँ से ब्लैंक शुरू हो रहा है? Read the book from cover to cover, and you will have a good working understanding of the public archaeology as a complicated, rich, and diverse field, as well as a knowledge of some of the most significant and iconic examples of public archaeology in action. Dash into a specific chapter, and you will find a concise and insightful introduction. Dash into a specific chapter, indulge into, मतलब किसी खास चैप्टर में अगर आप जाएंगे, tip into a specific chapter, give into a specific chapter, change into a डिप specific, हाँ डिप आएगा कि आप किसी में उसमें घुस डिप जाओगे। आएगा। हाँ एग्जैक्टली, गुड। जी हाँ। अच्छा, लेट्स आगे with let's into a specific chapter, you'll find a concise and insightful introduction to one aspect of the public archaeology with केस case स्टडी studies एंड and a list रीडिंग of टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग your understanding, ऑफ रीडिंग्स टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ अंडरस्टैंडिंग, डैश you use this book, I am confident। ठीक है, ये तो आसान लग रहा है मुझे। एज यू यूज दिस। हाँ बिल्कुल, ऐसे जैसे जैसे आप किताब को इस्तेमाल करते जाओगे, आपको जी हाँ। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। आई अब एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल एमर्ज विद
with a better understanding of what public archaeology is. ठीक है, बस हो गया ना, सबमिट करते हैं, क्या होता है? एक गलत होगा मेरा ख्याल इसमें भी। इसमें हमारा कौन सा? हाउएवर यू यूज ओ दिस बुक, आई एम कॉन्फिडेंट। हमने बाकियों को दिया ही नहीं था व्हाट ना, बाकियों को जज नहीं किया था हमने। हाउएवर यू यूज दिस, एज ज्यादा फिट नहीं हो रहा था। हाउएवर इफ यू, however you use this book, I am तो confident हम you will emerge with a better with a understanding. better understanding of what public archaeology is. हाँ मतलब however सही है, क्योंकि शुरू से वो AI बता is रहा है ना कि ये relax। इनकम्प्लीट है। वो शुरू से बता रहा है कि जी हाँ। इनकम्प्लीट है, फिर भी आप यूज करोगे तो आपको नॉलेज आएगी। तो हम अगर आप यूज करेंगे तो मैं हाँ, कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि वो शुरू से बता रहे हैं कि किताब ठीक हो गया। इनकम्प्लीट है। हमने ऊपर बताया ना, अल्पाइट एंड इनविटेबली ब्रीफ एंड इनकम्प्लीट वन। तो ऊपर हम यस। कह रहे हैं कि वो अल्पाइट का ही कंटिन्यूटी है, कि हालांकि ये इनकम्प्लीट है, हाउएवर फिर भी आप अगर उसको इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हम ऊपर से जो कंटिन्यूटी थी ना उसको हमने तोड़ दिया था खुद ही, वही ओह, बात जल्दी में। और आप बिलीव तो करें, जल्दी वाली बात है। exactly, and real exam is even harder than this one. The reading part of the real exam is very hard. Not the whole exam is very as hard as the reading part. Is वहाँ की vocabulary इतनी आसानी है, as और अल्पाइत वर्ग की नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी आती है, मुश्किल मुश्किल आती है। I'm not trying to scare कोई you, बात but it's reality. नहीं, मैं स्केयर होने वाला भी नहीं हूँ। चलें, गुड है। Now you do this. आप पढ़े भी खुद ही करें, जब आप मुझे बताइए ओके। ड्रॉप डाउन करूंगी। The image of a wall showing against the night sky. पहला ब्लैंक खोलिएगा। क्या आ सकता है? लिटिल। मुझे भी लिटिल लग रहा है। आगे नेक्स्ट, आगे चल। हाउलिंग, Since howling has a दोनों को दूसरा नंबर वाला पहले वो आई डोंट नो, साथ में खुल सकते हैं कि नहीं खुल सकते। हॉलिंग जी। हाँ, हाउलिंग, हॉलिंग several critical functions ठीक है। इट हेल्प्स मेंबर्स कीप इन डैश, कीप इन, in keep in touch, I think। ठीक नहीं, है। आगे, द डैश दैट, यार, the dash that moves have more the more likely stands from their host with the most visibility in the night sky। ये खोलिएगा फोर्थ नंबर वाला। द डैश दैट, मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन होगा। द पोस्चर ऑफ, किधर गया? The posture for dogs when holding nose pointed upward further the myth further further perpetuates नहीं, देख लेते।
ठीक है, ये देखिए आपने खुद ही किया सारे। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, और सिर्फ तरीका, थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस होनी चाहिए। यू डिड इट एवरीथिंग योरसेल्फ, राइट? आई डिडंट हेल्प यू एनीवे। इट्स जस्ट दैट यू हैव, Yes. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, लोग ग्रामर की भी बात करते हैं, बट मेरे लिए मैं ये मानती हूँ जो कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है वो उस देखा जाए। कभी कभी ग्रामर के चक्कर में सेंटेंस स्ट्रक्चर आउट हो जाता है। एनीथिंग दैट साउंड्स गुड टू योर ईयर। जी. ठीक है, सो यू वांट फर्दर हेल्प और इट्स फाइन, नाउ यू विल कीप डूइंग। No, it's okay now. हाँ, सो यू विल Now डू। I will practice and tell you. ओके गुड। सो आप माइंड में रखिएगा, जस्ट इन अ समरी, दैट द सेंटेंस इज करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, एंड यू शुड जज Yes. when you are choosing the options. When you open the options, please try to read all the blanks. Don't think that okay, the first Okay. blank you hear and you think that this sounds good and you will choose it. No. Third, it should sound good to the ear. Fourth, it should connect the sentence as a whole, and there will be some helping words Okay. in the sentence. कुछ ऐसे words होंगे जिससे आपको help मिलेगी। Yes. And you have to Yes. take care of the grammar, the past and the present से, कि अगर जुमला has है तो आपका आंसर भी किसी तरह present form में अगर है तो the answer should have to be in the form of a present form. Active passive voice में है किस Okay. तरह। Okay, and with the, now you did this in 3 minutes and 23 seconds. Now try to, because obviously मैं उसको खोल रही थी, आप कह रहे थे कि इसको open करें, जी उसमें हाँ. seconds और add हो। मैं इधर से पढ़ भी नहीं सही पा रहा था हाँ, so now you have ये to जो keep पैसेज है. keep that also in mind, that you have to like try to finish it in 2 minutes, because reading part लेंदी बहुत है, Okay. मुश्किल है, और सबसे कम टाइम उसका होता है आधा घंटा, जी हाँ. और वो भागता है। आप Okay. have you given an exam before? No, it's my first attempt. Okay, so inshallah I hope for the best. You are aiming for 65 or 79? No, I am just aiming for 55. 55, inshallah we will get it. Anyways, any more help needed, Inshallah. or shall I end the session? Okay. No, it's okay now. Okay ji, Thank you for your help. no problem. Thank you Thank you. very Allah much. Hafiz and best of luck. Allah Hafiz.